पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल वेव एनालिसिस के दो एप्लीकेशंस, पहला स्कैटरिंग फ्रॉम डेल्टा पोटेंशियल और दूसरा स्कैटरिंग फ्रॉम स्क्वायर वेल पोटेंशियल का स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में पार्शियल वेव एनालिसिस के लास्ट एप्लीकेशन स्कैटरिंग फ्रॉम हार्ड स्फीयर पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। Hard sphere potential is defined by UR equal to B0 for R is less than A and UR equal to 0 for the region R is greater than A. It is actually a repulsive square wave potential. R is less than A is the region of incoming wave and R is greater than A is the region of scattered or outgoing wave. Here again we are considering that the energy of incident particle is extremely low, so only L equal to 0 component contribute to the scattering. As we previously done, the radial equation for the region R is less than A is d square R over dr square plus 2 mu over h cross square E minus B0 R equal to 0, and letting k square equal to 2 mu E over h cross square and k0 square equal to 2 mu B0 over h cross square, then this equation becomes d square R over dr square plus k square minus k0 square R equal to 0. Because E is very less and V0 is high enough, so definitely K will be negative, and this equation can be written as d square R over d square R dr square minus K1 square R equal to 0. The solution of this equation would be R equal to A exponential minus K1 R, and similarly the radial equation for the region R is greater than A will be d square R over dr square plus 2 mu E over h cross square R equal to 0, and if we assume that k square equal to 2 mu E over h cross square, then we have d square R over dr square plus k square R equal to 0, and the solution of this equation is R equal to B sine of kr plus delta 0. On applying the boundary conditions at R equal to A, both of the solutions will be continuous, and so we have A exponential minus k1a equal to b sine of k1a ka plus delta 0, and its derivative will also be continuous at the boundary R equal to A, and so we have equation number 6 minus k1ae minus k1a equal to bk cos of ka plus delta 0. On dividing 5 by 6, we have tan of ka plus delta 0 equal to minus k over k1, and using the formula tan of a plus v, we have tan of ka plus tan of delta 0 1 minus over 1 minus tan of ka tan of delta 0 equal to minus k over k1. On solving this equation, we have tan of delta 0 equal to minus k plus k1 tan of ka over k1 minus k tan of k, it means equation number 8. As we have already assumed that the energy of incident particle is low, इसलिए ka will be much less than A, and for this condition tan of k is nearly equal to sine of k, and which is also equal to k. On using these, we have tan of delta 0 equal to minus k
plus k1 dot ka over k1, and which can you write tan of delta 0 equal to minus ka plus k over k1. Because scattering is from perfectly hard sphere, so the value of k0 will be equal to 2 mu v0 over h cross square to the power 1 by 2, and it will tends toward infinite due to hard sphere potential, and hence tan of delta 0 will be equal to delta 0. From equation number 9 we have delta 0 equal to minus ka. So this is the value of delta 0 from the calculation, and as we already know, the total scattering cross section is given by psi t over 4 pi over k square sin square delta 0, or sin square delta 0 is equal to delta 0 square, and so we have psi t equal to 4 pi over k square into k square a square, and psi t equal to 4 pi a square. This is the total scattering cross section for hard sphere potential, and it is very much clear from expression number 10 that total scattering cross section is independent to the incident energy. One important thing is here we have total scattering cross section psi t equal to 4 pi a square, and it doesn't depend on the energy of इंसिडेंट पार्टिकल. तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो जो क्लासिकल वैल्यू हो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की पाई ए स्क्वायर होती है उससे 4 टाइम ज़्यादा है. तो अगर हम इसको समझाना चाहें और ये माने कि यदि एनर्जी लिमिट हाई भी है, मीन्स हाई एनर्जी स्कैटरिंग भी है, तब भी हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मान 2 पाई ए स्क्वायर प्राप्त होता है. जैसे वी वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन द क्लासिकल रिजल्ट इन द लिमिट ऑफ हाई एनर्जी स्कैटरिंग, बट इवन इन दैट केस द क्रॉस सेक्शन हैज द वैल्यू 2 पाई ए स्क्वायर. 2 पाई ए स्क्वायर. So this 2 pi a square is obtained by this rigorous calculation, because अगर हम एनर्जी की वैल्यू हाई लें तो जो L है उसका मैक्सिमम मान a k हो सकता है, और इसकी जो L की लिमिट होगी वो 0 से a k तक होगी, और टोटल स्कैटरिंग 4 पाई k स्क्वायर ओवर 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L होगा. The average value of sin square delta L is equal to 1 by 2. So, if we use sin square delta L equal to 1 by 2, then we have psi t equal to 2 pi over k square into 2 ak into ak plus 1 by 2 plus ak plus 1. ये कैलकुलेशंस पूरी मैंने कर रखी है, इसको आप समझ सकते हैं. ये एक सीरीज है, सीरीज को सॉल्व किया है, और इससे हम साई टी की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू 2 पाई ओवर के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसका मतलब 2 पाई ए स्क्वायर प्राप्त होती है. इस प्रकार हम देखते हैं कि हाई एनर्जी स्कैटरिंग के लिए भी साई टी का मान 2 पाई ए स्क्वायर, जबकि पार्शियल वेव एनालिसिस से ये मान 4 पाई ए स्क्वायर यानी कि इसका डबल प्राप्त होता है. और इस डबल मान को समझाने के लिए हम वेव नेचर का यूज करते हैं. एक्चुअली वेव नेचर, पार्टिकल की वेव नेचर होने की वजह से हार्ड स्फीयर की जो एज है उनसे स्कैटरिंग होती है, और उससे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके कारण यह क्रॉस सेक्शन बढ़कर डबल हो जाता है. तो मैंने लिखा है दिस डिस्पेरियंसी विद द क्लासिकल ज्योमेट्रिकल वैल्यू इन बोथ केसेस अराइज because of the wave nature of particle.
this is a diffraction around the edge of sphere. जो sphere की edge है वहां से diffraction होगा और which leads to the constructive interference, and due to this constructive interference we have double value of total scattering cross section. Or here I clearly mentioned that the factor 2 arises because of the wave nature of particle, which leads diffraction at the edge of sphere and constructive interference between the incident and diffracted or scattered wave can take place, which contribute 2 pi a square to the total cross section, and hence the sum of scattering cross section is 2 pi a square. This is about the disparity of the values in total scattering cross section. Thank you.